So in today's lecture, we are going to discuss non-homogeneous linear equations, right? So the most general form of a set of linear equations in n unknowns is a11 x1 plus a12 x2 plus so on a1n xn is equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 plus so on plus a2n xn equal to b2, and this is so on last equation am1 x1 plus am2 x2 plus so on plus amn xn is equal to bm. This is the most general form of set of linear equation in n unknowns. N unknowns are x1, x2 up to xn. Call this equation number 1, where x1, x2, so on xn are unknowns, or you can call them as variables, unknowns, right? And unknowns, right? Such equations are called non-homogeneous equations. If the right hand side is not equal to 0, b1, b2, bm are all not equal to 0, then you can call them as non-homogeneous equation. Such equation are called non-homogeneous linear equations. Non-homogeneous equations, right? If on the other hand, the right hand side, all b1 b2 up to bm, b1 b2 up to bn are 0 0, then the equation is called homogeneous. Then the equation is called homogeneous equations. Homogeneous equations, right? So what does this mean? If your right hand side, that is b1 b2 up to bn, are not all 0, then it is called as non-homogeneous equation. And if right hand side b1 b2 up to bm are 0, then it is called as homogeneous equations, right? Now to solve this equation or to find the values of the unknowns, what we can do, we can convert this equation into matrix form and then try to solve it, right? If the matrix of the coefficients, matrix of the coefficient means what? These are the coefficients a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, and so on, am1, am2, amn. If we make this as a matrix, say coefficient matrix, let me write down this as a11, a12, so on, a1n, a21, a22, a2n, so on, am1, am2, so on, amn. If this is the coefficient matrix, this is called as coefficient matrix. You can write down here that this is coefficient matrix, right? And then the column matrix of the variables. Variables are, or unknowns are, x1, x2 up to so on, xn. And the constants on the right hand side will be again a column matrix b1 b2 so on bm, right? If you make this as a matrix form, this is called as, that is nothing but a into x is equal to b, where a is coefficient matrix,
coefficient matrix. B is matrix of the constant, right? Now this matrix AX is equal to B. This is the, what you can say, matrix representation of non-homogeneous equation, equation number 1, right? Now, what happens if we want to solve this? The matrix A given B, the matrix notation A given B, you can write down this as A comma B or A dot dot B. A given B, this matrix is formed by coefficient and the constants. This is called augmented matrix. Is called augmented matrix. It's called augmented matrix, right? Now, if you want to check find the solution of this system, what we have to do, right? So first of all, let us discuss what do you mean by system A of equation in 3 variables and their solution type. Now, this system may have, we have to check the consistency as well, but before that, let me system of equation in 3 variables. In 3 variables. Now, your solution may come as unique solution, infinite solution, infinite number of solution, and third is no solution. These are the types of solutions, right? Let us discuss one by one. What do you mean by unique solution? What do you mean by infinite solution? And likewise, right? Unique solution means what? Now, as you can see, this is 3 variables system of equation. So 3 variable means this will be 3-dimensional coordinate system. So if you say this system has unique solution, then the 3 plane intersect at a point. Let me write down, or let me draw. If your first plane is like this is just the representation of 3-dimensional coordinate system. If this is your first plane, this is your second plane, and this is your third plane. Let me draw properly. This is your third plane. So unique solution means what? This is the point where these 3 planes intersect. Let me change the color so that you can understand. This is the point. 3 planes intersect in a point. 3 planes intersect in a point, right? A single point. Then you can say that this system has unique solution. Infinite number of solutions means what? Let me draw the first curve. Let us say this is my first curve. This is my second curve.
and this is my third curve. ड्राइंग थोड़ा सा आपका मेरा जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा, बट आई होप आप समझ पाएंगे. दिस इज माय थर्ड कर्व, थर्ड प्लेन यू कैन से, कर्व नहीं. सो इस केस में क्या हो रहा है, देखो कि ये जो तीन कर्व है ना, वो एक सिंगल लाइन पे, एक मिनट, वो लाइन पे ड्रॉ आ जाएंगे. मतलब द थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट इन ए लाइन. ये तीनों जो कर्व है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वन. तो तीन कर्व जो है आपके वो यहाँ पे है. मैं ये समझना है सिर्फ आपको. अल्टीमेटली सॉल्यूशन हमको हमारे अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो एक सिंगल लाइन, एक लाइन होती है जिसपे ये तीनों कर्व जो है, तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, और लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, राइट. एंड देन द लास्ट वन, नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? नो सॉल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक और ये है कि टू कोइंसिडेंट प्लेन्स इंटरसेक्ट द थर्ड प्लेन इन लाइन, राइट. ये ऐसा भी हो सकता है. अब आते हैं नो सॉल्यूशन पे. नो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो तीन प्लेन कुछ इस तरह से होंगे. लेट मी ड्रॉ माय फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन. अब आपको लगेगा कि सर ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये एक के ऊपर एक अलग अलग है. सो क्या हो रहा है कि इनके बीच में कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं है. ये तीन के अगर आप चाहिए तो ये आप डॉट डॉट लाइन से भी कर सकते हैं. इरेजर नहीं यूज कर सकते हम लोग, इरेजर करेंगे तो पूरा लाइन जाएगा. हाँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जितना पार्ट आपका कर्व के ऊपर है, ये एक्चुअली कर्व के नीचे है, पहले वाले ब्लू वाले, और इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से आप बताएंगे, और फिर इसके आगे सिर्फ ड्रॉ करेंगे इस तरह से. सिमिलरली ये वाला भी कर्व जो है वो डॉटेड लाइन से होगा, इतना. तो यानी ये क्या हो रहा है कि तीन कर्व है, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे. थ्री प्लेन्स आर पैरेलल टू इट देमसेल्व्स. सो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन दैट this is just to understand what do you mean by unique solution and all that, infinite solution, infinite, unique and no solution. So यहाँ पे है that three plane intersect in a line, three planes intersect in a line, ये लाइन है वो. और यहाँ पे है three plane are parallel, three planes are parallel, they are parallel, they are not intersecting at any point, therefore no solution exists for these three plane, infinite number of solution for this plane. This is all about the geometrical representation or geometrical understanding of how to evaluate or what you can say, a system of equation in three variables having different solutions. Unique solution, that means the three planes intersect in a point. Infinite number of solution, that means three planes intersect in a line, and no solution if three planes are parallel to themselves, right. No solution exists when एक और चीज है that two planes are parallel and third plane intersect in two planes, यानी दो प्लेन जो है वो पैरेलल होंगे एक दूसरे को. लेट मी शो यू दैट ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन जो है, डिफरेंट कलर से बताता हूँ, दूसरा प्लेन कुछ इस तरह से है, दोनों प्लेन पैरेलल है एक दूसरे को, और तीसरा प्लेन जो है वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है. Let me draw this somewhat like this. लेकिन तब भी आपको यूनिक नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, राइट. सो इन दिस केस आल्सो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. नाउ वी हैव टू चेक what do you mean by or how to check the consistency of this system of equations. So next topic is consistency in echelon form. Condition of consistency. Condition of
consistency. Now, if you want to check the consistency of system where n unknowns and n equations are there, then what you have to do? You have to check the determinant of the matrix. If determinant of the matrix A, that is the coefficient matrix, determinant of A is equal to 0, the equation are inconsistent. The equations are inconsistent. अगर आपका determinant जो है, जो आपका coefficient matrix है, उसका determinant 0 है, तो आपका system जो है या system of equation है वो inconsistent होगी, right? But ऐसा भी हो सकता है कि number of equation जो है वो less हो number of unknown से. जैसे कि यहाँ पे let me go back to the equations. यहाँ पे m equation in n unknowns है, right? ऐसा हो सकता है कि number of equations are less than the number of unknowns. तो उस केस में ये क्राइटेरिया cannot be used. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसिस्टेंसी इन इकोलॉन फॉर्म देखेंगे. सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी इन इकोलॉन फॉर्म, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमको चेक करना है इस सिस्टम की, कंसिस्टेंसी इन इकोलॉन फॉर्म. I hope you you know how to reduce the matrix into echelon form, right? So how to check whether the system is consistent or not, non-homogeneous linear equation is consistent or not? What steps we have to take? First step will be write down the given system of m equation in unknowns in the matrix form. Write the system, the given system of m equation in n unknowns in matrix form. Matrix form क्या है? Matrix form AX is equal to B. That is nothing but this form. Let me go back to this form. As you can see, ये आपका फॉर्म, इस फॉर्म में आपको ये सिस्टम को लिखना होगा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो नेक्स्ट second step is reduce this into apply row transformations, apply row transformation or row operations on A and column matrix B and column matrix B till you get an echelon form. To reduce it into echelon form. Right? Till you get the echelon form. Next is then rewrite the equation as a set of linear equations. That means rewrite the equation as set of linear equations. Any equation में दोबारा लिखना है आपको set of linear equations. Then fourth point will be to check the consistency. तो यहाँ पे कुछ केसेस अराइज होंगे. Now echelon form में रैंक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज containing non-zero element, right? So rank of a matrix in echelon form, rank of matrix in echelon form is equal to number of non-zero rows, number of non-zero rows. जितने रोज होंगे नॉन जीरो, यानी इसमें कोई भी जीरो मतलब एटलीस्ट वन नॉन जीरो नंबर रहेगा. ऐसे ही रोज जितने रहेंगे, दैट इज योर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट? सो यहाँ पे दो केसेस अराइज होंगे. केस नंबर 1, जहां से हम लोग कंसिस्टेंसी देखेंगे. इफ रैंक ऑफ ए is less than rank of A given B. Augmented matrix की रैंक
is greater than rank of A. इस केस में आपका जो सिस्टम है, system of equations are inconsistent. In this case, equations are inconsistent. Equation are inconsistent. Right? Case number 2 will be if rank of A is equal to rank A given B. इस केस में अगेन दो सब केसेस है, सिस्टम तो कंसिस्टेंट होंगी, इक्वेशन दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लेकिन इसमें दो केसेस होंगे अगेन, राइट. आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज. क्या होगा, पहला होगा इफ रैंक इज डिनोटेड बाय R, if R is equal to n, that means what, rank of A equal to number of unknowns, n means number of unknowns, R is rank, then system has unique solution. इस केस में सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है. अब दूसरी केस है इफ rank is less than number of unknowns, then in this case what will happen, system has infinite number of solutions. System has infinite number of solutions. Right? All right, this is all about the theoretical things. Let me show you or explain you by example what we have to do. This again will after first of all we'll write the example, and while solving the example we'll use this steps to check whether the system is consistent or not and what are the solutions, right? So let me write down the first question. Example number 1. Test the consistency of the following equations. Test the consistency of the following equation and solve them if they are consistent. If they are consistent, right? The equations or the system is given like this: 2x minus y plus z equal to 9, 3x minus y plus z equal to 6, 4x minus y plus 2z equal to 7, and the last one minus x plus y minus z equal to 4. Now, as you can see, there are 4 equations and 3 unknowns given here, and we have to check whether the system is consistent or not. If consistent, then we have to find its solution as well, right? So our first step is what? Let me go back to the steps. First of all, we have to write down the given matrix in matrix form, right? Given system in matrix form. So again, going to the next page, write down the matrix into given system into matrix form. Ax is equal to b, where A is coefficient matrix. What are the coefficient of first equation? 2, minus 1, 1, right? Then second equation is 3, minus 1, 1. Third equation is 4, minus 1, 2. And fourth equation is minus 1, 1, minus 1.
This is your coefficient matrix, right? Then write down the variable or unknowns into a column matrix. There are three unknowns, x, y, z. So write down them, x, y, z as a column matrix equal to the constant terms as a column 9, 6, 7, 4. 9, 6, 7, 4. This is your first step, right? Now what we have to do, we have to convert this matrix into echelon form. All of you understood how to convert this matrix into echelon form? Our first step will be make this number 1. Now as you can see here in the fourth row there is -1. We can interchange these two rows so that this first place element or first row and first column element will become as -1. You can convert it into +1 as well by multiplying by -1, or you can keep this as it is and try to make the remaining element in the column zeros, right? So our first step will be R14, interchange first and fourth row. See, our target is what? We have to convert this matrix by using row transformation, convert this matrix and column matrix B to reduce this matrix into echelon form. Echelon form is what? Somewhat like this. Here I will write down somewhat like this. 1, some constant, say A, B, C, then 0, 0, 0, and remaining element 0 or other elements, right? These three elements or these element below the diagonal elements must be 0. This is called as echelon form, right? So to make this into echelon form, we have to use some row transformations. So our first row transformation is R14. Now after interchanging, what will happen? -1, 1, -1, right? Then now what you can do, you can solve this as it is, or you can write down the matrix into augmented matrix and then try to solve it. Both cases it will be same. Second row is 3, -1. If you have any doubt, you can message me in the chat box. Okay, 3, -1, 1, then 4, -1, 2, and then the last one 2, -1, 1. This is your interchanging of first and fourth row. Now this row, this column will be unchanged. You have to interchange A and B. A and B only, right? So this will be B is what? 1, 4, 4, 6, 7, 9, right? Now you have to make, using the row transformation, you have to make these numbers 0, right? So what will be the operation? I will continue on the next page. Our first operation will be R2 plus 3R1, as now the first element is -1. So you have to add them, R2 plus 3R1, then R3 plus 4R1, and R4 plus 2R1. Why these operations? Let me go back to the previous page so that you can understand. See, R2, that means I need to make this number 0. So yahan pe you have to multiply this equation by 3 so that this become -3 and this become +3, and add them. 3 minus 3 becomes 0, right? Similarly here, R3 plus 4 R1 and R4 plus 2 R1. These are the operations which I have taken, right? Now after doing this, 100% your first column will be like this. First element -1, rest of the element are 0. Why? Because हमने ऑपरेशन ही ऐसा लिए कि ये 3 नंबर 0 बन जाए. अब आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो तो अनचेंज है आपकी, 1, -1, राइट? अब आते हैं हमारे यहाँ के रोज पे. यहाँ पे क्या है हमारे पास? लेट मी राइट डाउन ओवर हियर सो दैट आपको थोड़ा आइडिया आए. -1, 1, -1, 3, -1, 1, 4, -1, 2,
then 2 minus 1 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 प्लस 3R1, तो ये नंबर तो 0 बन रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। माई फर्स्ट रो विल बिकम -3 3 -3, और फिर आपको ऐड करना है सेकेंड रो में। 3 - 3 बिकम 0, -1 + 3 बिकम 2, देन 1 - 3 बिकम -2, राइट। सिमिलरली आपको फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दैट रो विल बिकम -4 4 -4, और फिर आप इसमें से ऐड करेंगे, क्या होगा, 4 - 4 0, -1 + 4 is 3, 2 - 4 is -2, बराबर है। और लास्ट है फर्स्ट रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम -2 2 -1, और फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे R4 में। 2 - 2 is 0, -1 + 2 is +1, and 1 - 1 is 0। लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, ये -2 होगा एक्चुअल में, और फिर है 1 - 2 is -1। This is how the operation will be, right? Let me check. One question is there, sir, but first element should be 1. No problem. If you want to make it +1, आप लास्ट में भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको पहले ही करना है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस पेज। आप यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट -R1 मुझे करना है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने -1 रखा तो भी चलेगा, +1 रखा तो भी चलता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अगर आपको +1 रखना है आप वैसा करो, सिर्फ आपके ऑपरेशन कहाँ पे चेंज होंगे, देखो यहाँ पे चेंज होंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये जो प्लस लिखा है ना आपने यहाँ पे अगर आपका ये 1 बन गया तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू मेक इट 1, नो प्रॉब्लम, इफ यू कीप दिस एज -1, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का भी हमको करना पड़ेगा, इसको मुझे इरेज करना होगा। बी का मैट्रिक्स जो है उसको हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वो भी सॉल्व करना होगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, ये रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाएगा। यहाँ पे है वेरिएबल्स XYZ, XYZ इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या था, 4, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, 4 6 7 9 है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन R2, फर्स्ट एलिमेंट इज एज इट इज 4। अब सेकेंड एलिमेंट में क्या हो रहा है, देखो R2 + 3R1, 3 से पहले 4 को मल्टीप्लाई करो, 12 बन जाएगा, और फिर 6 में से 6 में ऐड करो, कितना होगा, 6 + 12 is 18। देन फर्स्ट रो को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 16, राइट। सो दिस विल बी 16, और फिर आप 7 में ऐड करेंगे, 16 + 7 is 23। सिमिलरली सेकेंड रो, फर्स्ट रो को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 8, 8 + 9 is 17, राइट। इसी तरह से आप आगे के ऑपरेशंस करेंगे। थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रहा है, क्लियर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। अब आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। व्हाट इज नेक्स्ट ऑपरेशन? अब देखो ये बन गया आपका 0। अब आपको क्या करना है, आइदर आप इंटरचेंज कर लो, इस रो को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, और फिर अगला ऑपरेशन करो। सो क्या करता हूं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी या तो 1 लाना है या तो -1 लाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूँ, R2 4 इंटरचेंज कर लेता हूँ। सो माई ऑपरेशन विल बी R2 4, दैट विल बी नथिंग बट -1 1 -1 as it is, then 0 1 -1, then 0 3 -2, and then 0 2 -2. This is the interchanging of second and fourth row only. XYZ as it is equal to
यहाँ पे भी आप इंटरचेंज करेंगे 4 एज इट इज, देन 17, देन 23 एंड देन 18. दिस इज जस्ट द इंटरचेंज. अब नाउ यहाँ पे 1 आ गया है, वेल एंड गुड, आपको चाहिए था. अगर -1 होता तो भी रखते तो भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे पहले ही 1 आ गया, वेल एंड गुड. नाउ वी हैव टू मेक दीज टू एलिमेंट 0. व्हाट विल बी द ऑपरेशन? R3 -3 R2 and R4 -2 R2. Why? Because ये प्लस में है इसीलिए. अगर ये -1 होता तो आपको प्लस करना पड़ता, क्योंकि ये प्लस है इसीलिए आपको माइनस करना पड़ रहा है. तो आपका क्या बन जाएगा ये मैट्रिक्स? -1 1 -1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर अलग आ रहा है. क्यों आंसर अलग आ रहा है? लेट मी चेक क्या क्या है. बट सर आंसर अलग आ रहा है. आंसर अलग नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है. तो पहले आंसर तो आने दो, चेक कर. हाँ चलो ठीक है, कुछ लोग आपस में भी चैट कर रहे हैं. ओके, अब आते हैं सेकेंड रो पे. सेकेंड रो को कुछ भी नहीं किया हमने, तो ये 0 1 -1 एज इट इज रहेगी. थर्ड रो के लिए आपको पहले सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. तो ये बन जाएगा 0 3 -3, और फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है. 0 -0 0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट. यहाँ पे होगा 3 -3 0, देन -2 -3 माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स +3 बन जाएगा. ये होगा -2 माइनस ऑफ -3, तो ये होगा -2 + 3, दैट इज नथिंग बट 1. बराबर है क्या? एंड देन द लास्ट वन R2, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो सेकेंड रो को. दिस विल बिकम 0 2 -2, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे. 0 -0 0, देन 2 -2 इज 0, -2 माइनस ऑफ -2, दैट मीन्स -2 + 2, तो ये भी 0 बन जाएगा. दैट्स इट. आपका आंसर एक्चुअली आ चुका है. लेट मी इरेज दिस पार्ट. अभी आपको बी का पार्ट फाइंड आउट करना है. हाँ, सो इनटू XYZ एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे आप. आपको थर्ड और फोर्थ रो में चेंज करना है, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेगी. अब देखो यहाँ पे सेकंड रो को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड है 17, 17 को 3 से करेंगे तो 51 होगा, बराबर. और फिर आपको R3 में से सब्ट्रैक्शन करना है उसका. 23 - 51 कितना हो जाएगा? 28, बट वो माइनस रहेगा. सो दिस विल बी -28. अगेन सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो होगा 34, 17 2 जा 34, और फिर आपको उसको सब्ट्रैक्शन करना है 18 में से. 18 में से 34 गया, कितना हो जाएगा? -16. सो दिस विल बी -16. एक्चुअल में आपका इकोलॉन फॉर्म आ चुका है. व्हाई? देखो, ये आपको चाहिए तो आप एक काम करो, अभी लास्ट में -R1 करना है तो कर लो, अदरवाइज ऐसा भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. कुछ लोगों को लगेगा कि सर एक में -1 है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 1 0 1 -1 0 0 1 एंड 0 0 0 इंटू XYZ इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो को भी मल्टीप्लाई होगा. -4 17 -28 एंड -16. अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपका इकोलॉन फॉर्म आ चुका है. देखो, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है. एक पोजीशन नीचे, एक पोजीशन राइट में, एक पोजीशन नीचे 1 आना चाहिए, वहां पे भी 1 आ गया, उसके नीचे के एलिमेंट 0 आ गए. एक पोजीशन राइट में, एक पोजीशन नीचे 1 आ गया, उसके नीचे के एलिमेंट 0 आ गए. सो दिस इज इन इकोलॉन फॉर्म. नाउ आपका इकोलॉन फॉर्म तो आ गया. अब अगली स्टेप क्या पूछा है उन्होंने? नाउ लेट मी गो टू दिस. rewrite the equation as set of equations, and rank of the matrix in echelon form is number of rows, non-zero rows. और आपको चेक करना है कि rank of A कितना है और rank of A given की B कितना है. So let me first of all check rank of A. Can you tell me what is the rank of A? A is this matrix, huh? This is your A. अगर आप देखेंगे तो नॉन जीरो रोज कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज है जिसमें सारे 0 नहीं है. 1 2 3, ये सिर्फ आपकी 0 रो है.
इसको हटा के कितने रोज बचेंगे? 1 2 3. सो इज द रैंक इज 3. Why? Number of non-zero rows, right? Rank of A is 3. Let me check how many people have. सबने आंसर सही दिया है. रैंक इज 3. अब सिमिलरली आपको रैंक ऑफ A गिवन B भी फाइंड आउट करना है. रैंक ऑफ A गिवन B क्या है? एक्चुअल में ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को कंबाइन लिखना होता है. लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज एंड राइट डाउन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. Rank of augmented matrix A given B. That is nothing but पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे A और फिर B का कॉलम भी लिखेंगे. -1 1 -1 0 1 -1 then 0 0 1 and 0 0 0. आप चाहिए तो एक डॉटेड लाइन डाल दो बीच में. एंड देन B का मैट्रिक्स है 4 17 -28 -16. लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये ऐसा होगा, राइट? सो ये है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी. अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? ये पूरा रो अगर देखेंगे तो ये भी नॉन जीरो रो बन गया है. सारे नॉन जीरो रोज बन गए हैं. इसका मतलब क्या होगा? रैंक ऑफ इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, क्योंकि पहली रो भी नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है उसमें सारे. इसमें भी नॉन जीरो है, इसमें भी नॉन जीरो है, तो टोटल 4 रोज आर देयर एंड देयरफॉर रैंक ऑफ ए गिवन बी इज 4. बट आपको क्या बताया गया था आपके थियरी में? दैट अगर रैंक ऑफ ए, लेट मी गो, हाँ, इफ रैंक ऑफ ए is less than rank of A given B, then equation are inconsistent. What is rank of A? In this case, 3, right? Let me go to the page. Rank of A is 3 and rank of A given B is 4. Therefore, we have, let me change the color so that आपको समझ में आए, that rank of A is equal to 3, which is less than rank of A given B, which is equal to 4. इसका मतलब क्या हुआ? This implies that the system is the equation are inconsistent. The equation are inconsistent. अगर दोनों की रैंक सेम होती तो आपकी सिस्टम कंसिस्टेंट होती, लेकिन क्योंकि रैंक डिफरेंट आ गई और लेस आ गई, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, राइट? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये, अगर ये आपने रैंक चेक भी नहीं किया होता तो आपको दिखता कि यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू -16 हो रहा था. तो यहाँ पे ही आपकी जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो रही है, विच इज नॉट ट्रू ना. 0 इज नॉट इक्वल टू -16. सो इस केस में आपका सिस्टम जो है, therefore the equations are inconsistent. This is your final answer. Is it clear to everyone? Boys and girls, let me pause. All right, let us see one more example. Next page. Establish the consistency. Example number 2. Establish the consistency of the following equation by considering the ranks of suitable matrices and solve them if possible, The system is x plus y plus z equal to 6, then x minus y plus 2z equal to 5, then 3x plus y plus z equal to 8, and 2x minus 2y
plus 3z equal to 7. This is the system of equation given. 3 unknowns and 4 equations are there. Now we have to check. Now यही क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, that test the consistency of the following equation and solve them if possible. इतने वर्ड जो है डिफिकल्ट लेने से बेहतर है कि डायरेक्टली बोल दिया कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी, तो भी चलेगा. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? राइट डाउन द मैट्रिक्स इनटू AX is equal to B form system, right? So first will be coefficient matrix, that is 1 1 1. इनका coefficient है 1 1 1 1 1 1. Second है 1 minus 1 2 1 minus 1 2. Then third है 3 1 minus 3 1 1 1 1. And the fourth equation is 2 minus 2 3 2 minus 2 3. Now what I will do in this example, I will solve them simultaneously. So I will consider augmented matrix A given B. एक डॉटेड लाइन दे देता हूं या एक लाइन दे देते हैं यहां पे. इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए. हर बार नहीं कर पाऊंगा मैं ये, लेकिन यहाँ पे पहले लाइन में मैं कर देता हूं. दिस इज द separation, and then I will continue for the B matrix, that is 6 5 8 and 7. 6 5 8 and 7. This is your augmented matrix. अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है सॉल्व करते जाता हूं इक्लोन फॉर्म के लिए. सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा? पहला नंबर तो 1 आ गया है हमारा, उसके नीचे के एलिमेंट 0 करने हैं. तो पहला ऑपरेशन होगा R2 minus R1. सेकेंड ऑपरेशन होगा R3 minus 3R1. देन R4 minus 2R1. देख लो ऑपरेशन सही है क्या नहीं है. You can tell me in chat box. My first row will be as it is 1 1 1 and 6. अब मैं डॉटेड लाइन रखूंगा यहाँ पे. देन सेकेंड रो में क्या हो रहा है? डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन है. 1 minus 1 0, minus 1 is minus 2, 2 minus 1 is 1, 5 minus 6 is minus 1. बराबर है. देन 3 से पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी फर्स्ट रो बन जाएगी 3 3 3 एंड 18. और अब आप सब्ट्रैक्शन करो इसमें से. 3 minus 3 is 0, 1 minus 3 is minus 2, 1 minus 3 is minus 2, 8 minus 18 is how much? Minus 10. देन सेकेंड रो को फर्स्ट रो को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. मेरी फर्स्ट रो बनेगी 2 2 2 and 12. लेट मी चेक द चैट बॉक्स. सर ऐसे स्टार्ट में ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले सकते हैं? यस, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए, ये एग्जांपल के लिए ऐसा स्टार्ट किया है. ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तक सही है. अब आते हैं यहाँ पे. 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है फर्स्ट रो को, और अब सब्ट्रैक्शन करेंगे. 2 minus 2 will be 0, minus 2 is minus 4, then 3 minus 2 is minus 1, 7 minus 12 is minus 5. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब आते हैं अगले स्टेप पे. ये एलिमेंट हो गए आपके 1 0 हो गए, 1 और उसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए. अब मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट आइदर 1 बना दो या उसके नीचे के एलिमेंट को बस 0 बना दो, तो भी चलेगा. ऐसा भी चलेगा. अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं इसको पहले 1 बनाता हूँ, दोनों भी चलेंगे. क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2 है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, R3 minus R2 कर लेता हूँ. क्योंकि क्या होगा, -2 + 2 0 बन जाएगा. और यहाँ पे -4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. R4 - 2 R3. देखो कुछ लोग बनेंगे कि सर मैं इसको एक काम करता हूँ, -1/2 R2 कर लेता हूँ, तो भी चलेगा. ये 1 आ जाएगा और उसके बाद में आपको इनको 0 करना है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And therefore your first row will be 1 1 1 6. Second row will be as it is 0 -2 1 -1. Second row के लिए क्या करना है, R3 - R2 0 - 0 0 -2, ये -2 -2 ऐसा बन रहा है वो, -2 -2 that is -2 + 2, तो ये 0 हो जाएगा. Then -2 0, देन यहाँ पे बन जाएगा -2 - 1 is -3. यहाँ पे होगा
-10 + 1 दैट इज -9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R4 2 से मल्टीप्लाई करो R3 को। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ किया हमने, यहाँ पे R4 - 2 R2 होना चाहिए। दिस इज 2, लेट मी इरेज दिस, ये R2 होना चाहिए, हम लोग R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड रो को, दिस इज 0 -4 2 -2। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 -4 + 4 0, -1 -2 इज -3, बराबर है क्या? कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे? एक मिनट, हाँ, दिस इज 0 0, ये हमारा -1 आता है या +1 आता है, वो चेक करना है। एक मिनट, हाँ, R4 माइनस, देन यहाँ पे होगा 1 -2 दैट इज -1, एंड द लास्ट वन -5 + 2 दैट इज -3। ओके, now what we'll do, well, either we can interchange the R3 and R4 row, or you can keep this and directly solve the example. As you can see, R3 and R4 are almost same, just differ by some multiples. If you multiply the fourth row by 3, it will give you the same row as R3. So you have to do one operation only. That operation is R3, say R4 minus 3R3. Sorry, R4 minus 3R3, or reverse case. What we'll do? We'll interchange the first, third, and fourth row. R3 4. So that will transform the matrix to 1 1 1 6, 0 -2 1 -1, 0 0 -1 -3, then 0 0 -3 -9. Now I need to make this number 0. So what will be my operation? My operation will be R4 minus 3 R3. So that will transform the matrix to 1 1 1 6, then 0 -2 1 -1, then 0 0 -1 -3, 0 0 -1 -3. Now the third row or fourth row is 0 0 -3 -9, and I'm multiplying the third row by this row by 3. So this will be 0 0 -3 -9, and if I subtract them, all these rows, the last row becomes 0, right? Now as you can see, this is in echelon form. If we want to make this number as 1, okay, divide by -2, and if you want to make this number as +1, divide by multiply by -1. That also give you the answer, or this is also in echelon form, which is in echelon form. Now what we have to do, we have to check the rank of A. This is the rank of A. Rank of A here is number of non-zero rows, 1 2 3. If you just consider this matrix, this one, so this rank of A is 3, and what will be the, again erasing, what will be the whole rank of this? The last row is 0, the other 3 rows are non-zero, so rank of A is equal to 3, which is nothing but rank of A given B. This means what? Your system is consistent. System is consistent. That's it. That means solution exists, right?
And therefore, hence the system, as you can see, number of unknowns are 3 and number of equations you got are 3. Rank is 3, and therefore system has unique solution. The equation of the rank of A, also the rank of A is equal to the number of unknowns. Number of unknowns. Now unknowns are x, y, z. That are also 3, and therefore system has unique solution. System has unique solution, right? And therefore, now you have to make the equations from this matrix. Multiply this row by x, y, z, and this will be the constant. So this will be nothing but x plus y plus z equal to 6. First equation. Second equation is minus 2y plus z equal to minus 1. Third equation is, you can write down 0 into x. Then 0 into x plus 0 into y minus z equal to minus 3. As you can see from the third row, z is nothing but 3, because minus z equal to minus 3, so z is equal to 3. Z equal to 3 you will put in this equation, you will get value of y as 2, and then put the value of y and z in equation number 1. This will be x plus 2 plus 3, x plus 5 equal to 6, so x is 1, and therefore x is equal to 1. This system you can also solve by using the calci as well. So this is the equation or the solution of the system of equations, right? As the rank of A is equal to number of unknowns, therefore system has unique solution, namely x is equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to 3. Hope you understood the lecture of today. I hope you will solve more examples on this topic. Okay, thank you so much.